Shri Ram. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Ram Ram to everyone joining this session. We are at third chapter of shrimadbhagwat Geeta, Karma Yoga, verse number 3.02. So we have covered verse 3.01 and 3.02. In 3.02 verse, Arjun says, Vyamishrenev vyakyen buddhirmohayasiva me tadekam vad nishitya yen sheyo hamapnuyan. So Arjuna is saying that at certain times, Lord Krishna, you are saying that Sankhya Yoga is better, that with help of mind and the analysis we should know what is soul, and on other hand you are stating that Karma Yoga, we should do karma, I should fight war. So with your ambiguous words you are making me confused. Tell me whatever is certain so that I can attain the highest good. So whichever is better, is it Sankhya Yoga or is it Karma Yoga? So tell me clearly. For that now Lord Krishna is replying. Shri Bhagwan Vach, verse 3.03. Lokesmin dvividha nishtha pura prokta maya nagha ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम लोके अस्मिन dvividha nishtha. So the blessed Lord Shri Krishna says that Shri means blessed. Blessed Lord Krishna says Loke asmin dvividha nishtha. Now there are two kinds of faith. Loke asmin, in this world there are two kinds of faith. Dvividha nishtha pura prokta, which was also earlier said. So Arjun is literally taking it as that it was earlier said in chapter 2, but Shri Krishna is stating as a deeper meaning, that in earlier births I have stated it, in the earlier years I have stated it. However, whatever they are understanding, here Lord Krishna is saying Loke asmin dvividhanistha. There are two kinds of faith in this world. Pura prokta, as said by me, anag. Anag means sinless. So you are sinless. You are not having any sin. So it is addressed to Arjun. O Arjun, there are two kinds of faiths simultaneously existing in this universe. Jnana yogen sankhyanam karma yogen yoginam. So one is, that is Sankhya Yoga, it is for Jnana Yogi. And Jnana Yogi means those who are practicing spiritualism with help of mind and using analysis, that what is ephemeral, what is eternal, क्या शाश्वत है, क्या नश्वर है. On this basis they are analyzing and they are finding that it is the soul which is eternal. So this is the basis for them. Karma yogen yoginam. And on other hand, some are working, they are doing actions, they are having some purposeful actions and devoting self to the feet of God. That is the Karma Yogi. So for Yoginam, that who are practicing Buddhi Yoga, so they are going for actions. So there are two types of faiths, that is Buddhi Yoga and Sankhya Yoga. And at every time the followers of both type of practitioner who want to attain God are found, and at that time also both kind of persons are there.
So the literal meaning of this is, the blessed Lord says, O unblemished one, so O sinless, two kinds of steadfastness, two kinds of faiths in this world were spoken by me in the days, the yoga of knowledge for the men of realization, through the yoga of actions for the yogis. So some are karma yogi and the others are sankhya yogi. Now, Sri Krishna explained the two paths leading to spiritual perfection. The first is acquisition of knowledge through the analytical study of nature of soul and its distinction from body. When the person realizes, acquires knowledge, acquisition of knowledge, by the distinction that this body may be burnt into fire, however, the soul, achintyoyam, akledyoyam, adahyoyam, ashoshev, this soul cannot be burnt, cannot be cut, cannot be wetted. So this soul is impermeable of whatever is present in this world. So the person acquires this only by analyzing the mind at the level of mind. If the person practices it, then also that person is able to discriminate between body and soul, that this body ultimately burnt to ashes but soul is not. So this is kind in which the body and soul are two things. That's why it is Sankhya Yoga. It is the yoga of numbers. Sankhya means Sankhya. So on the basis, if it is found a duality, that these are two different things. So on the basis of number, para and apara prakriti, jad and chetan. So Sankhya Yoga tells that by mind also it can be achieved. So the first is acquisition of knowledge through the analytical study of nature of soul and its distinction from body. Sri Krishna refers to this as Sankhya Yoga. People with a philosophic blend of mind are inclined toward this path of knowledge. So those who are focusing on philosophy, जो दर्शन शास्त्र में विश्वास रखते हैं, वे इस मार्ग की ओर जाते हैं और अपने माइंड के सहारे, ये मन के स्तर के सहारे, एक मन होता है और एक उससे ऊंची बुद्धि होती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ माइंड इट इज़ लिटिल बिट लोअर लेवल. सो ऑन द बेसिस ऑफ माइंड, माइंड इज एवर फ्लक्चुएटिंग, ये इधर उधर भागा करता है, जबकि बुद्धि को स्थिर करना ज़्यादा सरल है. वो विवेकिनी बुद्धि होती है, वो ईश्वर के अधिक नज़दीक होती है, वो चेतना का ऊंचा स्तर है. सो द इंटेलेक्ट इज द हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हाउएवर द माइंड इज द लोअर लेवल. देन ऑल्सो by the analysis and using the mind, they are practicing it and ultimately achieving that soul is something different and eternal. So people with a philosophic bent of mind are inclined toward the path of knowing the self through intellectual analysis. So whatever they are seeing, on the basis they conclude that soul is different. So the second is the process of working in the spirit of devotion to God, and the other one, that is Buddhi Yoga, that is also stated as Karma Yoga. What is there? It is different from Sankhya Yoga. In this, peoples are doing some actions, purposeful actions, to run their life, but devoting themselves at the feet of God. So the second is process of working in the spirit of devotion to God or Karma Yoga. They are devoting their karma at the feet of God. Whatever they are doing, they are thinking with, they are faithing that this is by the energy of God. So these and their fruits, whatever are the results, everything they are surrendering at the feet of God. Shri Krishna also calls this Buddhi Yoga. So Buddhi Yoga and Karma Yoga is same. In this the followers are doing actions and the results are surrendering to the feet of God.
Working in this manner purifies mind. So if this path is followed, this purifies mind. So in this mind is purified, its consciousness level awakens, and the knowledge naturally awakens in the purified mind. When mind awakens, then the intellect, the analysis itself awakens. Ultimately the knowledge, the levels of mind also opens up, leading to enlightenment, and in this manner the natural enlightenment is there. Amongst the people, it is the superior and more superior consciousness level or yoga which is stated by Shri Krishna in later on sections. So the first one was the Sankhya Yoga. So it was told the later one and the superior one is Karma Yoga. So in the next chapter or third chapter, Lord Krishna is stating this, that this is superior. So second is the process in this, the knowledge naturally awakens and purifies mind and leading to enlightenment. Amongst people interested in the spiritual path, there are those who are inclined toward contemplation. So in the both type of yoga, so first type is the Sankhya Yoga. In this persons are contemplating, लोग इसमें चिंतन किया करते हैं, दर्शन किया करते हैं, ये सत्य है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और अंततः वे सांख्य योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो सांख्य योग की तरफ प्रवृत्त होते हैं चिंतन के द्वारा. बाय कंटेम्पलेशन दे आर हीडिंग टुवर्ड्स सांख्य योग विद द हेल्प ऑफ माइंड and the analysis. And then there are those inclined to action, while others are those, they are thinking that a person cannot live without action. So renunciation of complete work is impossible. पूरी तरीके से कर्मों का त्याग तो impossible है, असंभव है. क्योंकि हमारे शरीरगत कर्म तो होते रहते हैं. देयर आर द एक्शंस विच आर इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य कर्म है, अत्याज्य कर्म है. देयर आर नित्य कर्म हैं जो हमारे शरीर में होते रहते हैं, जैसे हृदय का धड़कना, इसी तरीके से मन की गति, तो ये होते रहते हैं. तो द कर्म योगी इज knowing that the complete renunciation of work is impossible, so he is doing karma, he is doing the actions for body also, for health of body also, and some purposeful actions for society also. So every type of actions he is doing, however the mind and intellect is surrendering at the feet of God. So this is the noble way to achieve spiritualism, and this is Buddhi Yoga, this is Karma Yoga. So in this, both of these paths have existed ever since the soul's aspiration for God realization has existed. So since the persons started to realizing the God, or they have tried to achieve the acknowledgement, since then both of these paths were there. Shri Krishna touches upon both, since this message means the people of all temperaments and inclinations. Now, some are practicing Sankhya Yoga. They are saying, why to do actions? Go and renunciate this world, go to jungles. And why we should do actions when Atma, the soul is eternal? जब आत्मा अमर है तो काम क्यों करना? और वे जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, और मन के एनालिसिस के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा वे आत्मा को और अपने शरीर को और शुद्ध करने का प्रयास करते हैं. लेकिन इस प्रकार की विधि में खतरा बना रहता है, क्योंकि मन की गति इधर उधर होती है. वो पिछले किए गए कर्मों की पुनरावृत्ति करती है. कर्म जो किए गए हैं उसका जो मन पर प्रभाव हुआ है,
तो मन वहाँ बार बार जाता है, इसलिए मन की शुद्धि नहीं हो पाती। यद्यपि वे कर्मों का बाह्य कर्मों का तो परित्याग कर देते हैं, लेकिन मन की शुद्धि नहीं हो पाती। जबकि बुद्धि योग में ये कार्य सहज हो जाता है, क्योंकि हम मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो बुद्धि योग अधिक आसान उपाय है। इसमें कर्म करते हुए और उससे प्राप्त फल को और कर्म दोनों को भगवान के चरणों में समर्पित करके हम प्रभु की शरणागत के सहारे आगे बढ़ते चले जाते हैं। वर्ष 3.04 न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न कर्मणाम् अनारंभात्। If we unarambh, that means if we do not start work, if we abstain from work, so we may abstain from external duties, from the social duties or the duties towards our family, that only we can abstain. However, the bodily, the internal actions will continue. Na karmanam anarambhat. So Lord Krishna is telling about external duties. So if we abstain from work, renunciate the work, external works, then also we cannot attain freedom from karmic reactions. यदि हम कर्मों का बाह्य रूप से त्याग कर दें तो भी नैष्कर्म को, यानी कर्म से उत्पन्न होने वाले बंधनों को पूरी तरीके से काटा नहीं जा सकता, क्योंकि कर्म के आरंभ न करने से भी मन की गति तो उन कर्मों में और उन कर्मों से होने वाले आनंद में और जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे प्राप्त होने वाले आनंदों में लगातार रस लेती रहती है। सो न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णते। इफ द पर्सन इज abstaining from work, then also he cannot free himself from karmic reactions. So the reactions, the impact cannot be achieved. The person cannot be free from the impact of karmic reactions. Though we have abstained from the work, but our mind is continuously going to those works. So the mind is continuously engaged with those actions. Though externally it is abstained, externally it is renunciated, then also our mind is indulged. Even our eyes keep on seeing the beautiful scenes. The ear is now in thinking about listening good music, and our all the senses, these are taking the interest, continue to take interest in their respective stimuli. So by external abstaining, external renunciation has no meaning, because our other consciousness levels are indulged in it. So na karmana manarambhat naiškarmyam purushošnute न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न च संन्यसनादेव. So the person who is thinking that we should abstain from work, then also that person cannot free from the karmic reactions. Na cha sannyasanadev. So if a person says no, it is very difficult to become simply lay down and do nothing, so let us go to jungle, because there the things will not be there, and so our mind and our senses will not get indulged with it. So that person ultimately taking sannyas. It means that is renunciating the society itself. So one is renunciation from work, and other is renunciating the society. So that person renunciate the society and ultimately go to jungle. But that is also having purposeless efforts. Why? Because na cha sanyasanat ev, not by renunciation of society, siddhim samadhigachati,
that person cannot achieve the perfection. Both kind of persons are existing at that time. Some are renunciating the work, remaining in this society. They are doing nothing, only they are doing bhajan pujan. So they are only offering the flowers at the feet of God, but doing nothing. They are remaining in society. But Shri Krishna is not favoring this. Shri Krishna is saying, what is your duty to society? You better do it and offer the fruits of it. And what is the lure of karma actions in the feet of God? कर्मों को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो. ये मत सोचो कि क्या श्रेष्ठ कर्म है और ये कर्म छोटा है या बड़ा है. जो कर्म आए उसको खूब आनंद से करो, भगवान की सेवा समझ के करो. उन कर्मों को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और प्रसाद रूप में जो फल प्राप्त होते हैं उनको भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दो. तो कर्म के अनारंभ से यदि हम सोचें कि भगवान के भजन पूजन से ही भगवान को पा लेंगे तो भगवान इसे श्रेष्ठ नहीं मानते. वे कहते हैं ये तो कर्म स्वरूपा धरती है. वी आर इन्फेस्टेड विथ सत रज तम. द 3 types of guna are within us which ultimately motivate us to do work. So we cannot simply renunciate the work. हम सतरज और तम गुणों के द्वारा कर्म की ओर प्रेरित होते हैं. तो हमें कर्म तो करना ही चाहिए और कर्म को और कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए. So what is the literal meaning of this? That a person does not attain freedom from action by abstaining from action. So we cannot free us from actions by abstaining the actions. So हम अपने आप को कर्मों के त्याग से, कर्मों के संस्कारों का त्याग करने वाला नहीं बना सकते. Nor does we attain fulfillment merely through renunciation. और संसार के इस समाज के परित्याग से भी हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते. The first line of this verse refers to कर्म योगी and the second line refers to Sankhya Yogi. So first is Karma Yogi, that is Na Karmanam Anarambhat. So in this first line Shri Krishna says that mere abstinence from work does not result in a state of freedom from karmic reaction. So if we remain in society and only do bhajan pujan, only do pure spiritualism without an action, it results nothing. So then it does not result in a state of freedom from karmic reaction. The mind continues to engage in fruitive thoughts, and since mental work is also a form of karma, so we have not completely abstained ourselves from work, and these senses are also engaged, not only mind, so they are engaged in karmic reactions. So how can we abstain ourselves completely from actions? So such type of karma yoga is a kind of hypocrisy. So we should not go for it. We should do full-fledged karma with full zeal. हमें तो अपनी शक्ति से, पूरी शक्ति से कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति कर्म स्वरूपा है, यज्ञ स्वरूपा है. कर्म भी करती है और फिर उसका यज्ञ कर देती है, होम कर देती है प्राणियों के कल्याण में. उसी तरीके से हमको भी कर्म तो करने चाहिए, लेकिन उसके फल को अपने लिए नहीं रखना चाहिए, वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए. सो वी शुड प्रिफर कर्म. बाई एक्शंस ओनली वी कैन अचीव द फुलफिलमेंट. And since mental work is also the form of karma, it binds us in karmic reaction just as physical work. Mental work has deep traces. हमारे कर्मों का तो उतना संस्कार नहीं बनता जो हमारे मन के विचारों का तो और गहरा संस्कार बनता है. तो इसलिए हम जब तक मानसिक कर्मों से मुक्त नहीं होंगे तब तक कर्मों के संस्कार के बंधन से भी मुक्त नहीं होंगे. सो मेंटल वर्क हैज डीप ट्रेसेस. ए ट्रू कर्म योगी मस्ट लर्न टू वर्क without any attachment to fruit of action. What does it mean by buddhi yoga or karma yoga? We should engage ourselves
in karma without having any attachment to it or its fruitful result. Now, so this requires cultivation of knowledge in the intellect. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि. कर्मण्येवाधिकारस्ते, लॉर्ड कृष्णा सेज कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल पर नहीं. माँ कर्म फल हेतुर्भू, तू कर्म को फल के लिए मत कर. माते संगो अस्तु कर्मणि, और तेरी अकर्म में भी आसक्ति ना हो कि जब फल के लिए करना ही नहीं है तो इससे अच्छा अकर्मणि बनकर बैठो. कर्म तो कर लेकिन ईश्वर के लिए कर. द सेम इज स्टेटेड हियर अगेन बाय लॉर्ड कृष्णा दैट द everything is offered at the feet of God and we should indulge in our social works and all the work which is our duty. So a true karma yogi must learn to work without any attachment. Hence philosophic knowledge is also necessary for success in karma yoga. Simply doing work cannot attain anything for us. हम काम तो करते चले जाएं, बैलों की तरह काम करते चले जाएं, इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा. बट अ फिलॉसफिकल नॉलेज, अ पिंच ऑफ फिलॉसफी, थोड़ा सा दर्शन शास्त्र भी इसमें डालना जरूरी है कि हम कर्म क्यों कर रहे हैं, हम अपनी प्रगति के लिए कर रहे हैं, इनके फल का क्या करना चाहिए, तो प्रभु के चरणों में त्याग करना चाहिए. तो बुद्ध योग में भी सांख्य का थोड़ा सा संपुट होना ही चाहिए. वहाँ पर भी हम दर्शन शास्त्र की इतनी मात्रा होनी चाहिए कि ये कर्म भगवान की शक्ति से हो रहे हैं, इसलिए इनका फल भी भगवान के चरणों में जाना चाहिए. इससे हमारा लेना देना नहीं है, तभी इससे हमारे आगे की गति होती है. सो इट पिंच ऑफ फिलॉसफी इज नीडेड फॉर कर्म योगी. नाउ ऑन द सेकंड फ्रेज व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग, that for Sankhya Yogi, those who are analyzing this thing that why to work, remain in society but do not work, as soul is eternal, आत्मा तो अमर है तो काम क्या करना. There also they should learn a pinch of action is necessary for them, कि कर्मों का पूरी तरीके से परित्याग नहीं किया जा सकता, इसलिए वो वे कर्मों का पूर्णतया निषेध ना करें, जो जरूरी कर्म है उसको करते रहें. इस प्रकार से कर्म योग में थोड़ा सांख्य योग का संपुट आवश्यक है और इसी तरीके से सांख्य योग में भी कर्म योग का संपुट आवश्यक है. इन दोनों को पूरी तरीके से वाटर टाइप कंपार्टमेंट यानी अलग अलग नहीं किया जा सकता. तो हम कर्म करें और उसी के साथ बुद्धि का उपयोग करते हुए हम ये देखें कि उन कर्मों का, उन कर्मगत संस्कारों का क्या हम पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा है, क्या वे संस्कार तो नहीं छोड़ रहे हैं. इन दिस मैनर इफ वी आर डूइंग वर्क वेरी ब्यूटीफुली बैलेंस्ड एंड एक्सप्लेन्ड बाय लॉर्ड कृष्णा अबाउट कर्म योग एंड सांख्य योग, बोथ ऑफ दीज प्रैक्टिसेस वर practiced by many of the spiritualists at that time. Now my wife Vandana Jaiswal will recite a bhajan for us. राम राम श्री राम. अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्. अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. मारो सावरियो सरकार, मारो
सांवरिया सरकार मोहे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। थारी आस लगाऊं, हर पल तुझे बुलाऊं, थारे दर्शन पाकर अपने भाग्य जगाऊं। मारो तू ही है भरतार, मारो सांवरियो सरकार मोहे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। हम तुम्हारी पराई नहीं है, गैर के दर पे आई नहीं है। हम तुम्हारी पराई नहीं है, गैर के दर पे आई नहीं है। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओबा के बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कान में कुंडल साजे, सिर मोरे मुकुट विराजे। सखियाँ पागल होती जब जब होठ पे बंसी बाजे। है चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल भाला। है चंदा ये सांवरा, तारे हैं ग्वाल भाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बाके बिहारी कजरारे, मोटे मोटे तेरी नैन। है नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरारे, मोटी मोटी तेरे नैन। है आँखों का काजल, मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल कर डाली रे। कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द। न तुमदिष्टं न तुमदिष्टं, पाहि मां रक्ष मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ, हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति करो। श्री राम। बहुत अच्छा भजन गाया वंदना, बड़े भाव से गाया, बहुत सुंदर गाया। राम 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 राम। श्री कुमार राम 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 राम, बहुत अच्छा लगा। राम 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 आंटी, राम राम भैया, राम 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 राम। I very beautiful bhajan. We really enjoyed it, auntie. Thank you so much, Vandana ji.
Thank you, Bhaiya, for the discourse. I really missed it a lot. It's good to be back. Thank you for the discourse. Thank you all.